Question number 26 to 30. The table given below shows the percentage marks distribution of 7 students in a monthly class test on various subjects. The figure given in the brackets for each subject represents the maximum marks for a particular subject. तो इस डेटा को पहले ध्यान से समझिएगा. आपको ये सब्जेक्ट्स गिवन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी. इसके अलावा आपको गिवन है इनके मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 75, 75, 150 फॉर मैथ्स, 200 for science, 100 for English and 50 for Hindi. Then you are provided with the percentage of marks that a student has got in a particular subject. So for example, I want to check the percentage of marks that she has got in mathematics. The value will be 75. So let's move on with the questions. Question number 26. What is the total marks obtained by student A in history, geography and science together? History, geography और science के total marks आपको calculate करने के लिए for student A क्या करना होगा? अगर मैं fundamental method से जाता हूं तो I need to calculate the marks that he has got in these three subjects, that is history, geography and science. I'll add them up. Let's say मैं history के marks को represent करता हूं H से, ज्योग्राफी के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता हूं जी से, एंड साइंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता हूं एस से. सो आई वुड नीड टू ऐड दीज मार्क्स इंडिविजुअली, दैट इज एच प्लस जी प्लस एस, which represent individually the marks that A has got in these three subjects. Then I need to divide this by the total of maximum marks of these three subjects, that is 75 for history, 75 for geography and 200 for science, that is 350, and then multiply this entire value by 100. So instead of doing this, I can take a shortcut to this by way of weighted mean. Now, how do we calculate weighted mean? For calculating weighted mean, I calculate the ratios in which these subjects have got their maximum marks. So dividing all of these maximum marks by 25, I get 3 for history, 3 for geography, 6 for maths, 8 for science, 4 for English and 2 for Hindi. Now I'll calculate the weighted average of percentage marks of A in these three subjects, that is 84% for history, 72% for geography and 67% for science. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे weighted mean? 84 into 3 plus 72 into 3 plus 67 into 8 whole divided by the total of the individual weights, that is 3 plus 3 6, 6 plus 8 is 14. This will give me the average percentage of these three subjects. So 84 into 3 will be equal to 252, 72 into 3 will be equal to 216 and 67 into 8 will be equal to 536. Divided this value by 14, the total will be equal to 1004 divided by 14, which is equal to 71.7. So the student has got a total of 71.7% marks in these three subjects, that is history, geography and science. So calculating 71.7% of 75 plus 75, 150, and 150 plus 200, 350, we'll get 250.95. That is, you will mark option number C as the answer to this question. फिर से देखिए हम लोगों ने किस तरह से weighted mean को calculate किया. We assigned the weights by way of calculating the ratio of the maximum marks. तो हमने सभी के maximum marks को 25 से divide किया, so that we get 3, 3, 6, 8, 4 and 2 for these subjects individually. Then we multiplied the individual percentage of these subjects with their individual weights. So 84 into 3 for history, 72 into 3 for geography and 67 into 8 for science. We added them up. तो ये आपके पास के अंदर average percentage आपकी calculate हो जाएगी when we would divide these by the sum of their individual weights, that is equal to 3 plus 3 is 6, 6 plus 8 is 14. तो 1004 को जब हमने 14 से divide किया, we get 71.6%. This is the average percentage
that he has got out of 350, that is the total maximum marks of these three subjects. तो 71.7% of 350 जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, we get 250.95. Therefore, we will mark option number C as the answer to this particular question. Question number 27. What is the percentage of total marks obtained by student B in all the 6 subjects together? टोटल परसेंटेज. अब सोचिए, अगर हम इसे वेटेड मीन से सॉल्व ना करें तो क्या होगा. सो फॉर दैट आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इनके इंडिविजुअल मार्क्स फॉर बी. तो 76% ऑफ 75, 58% ऑफ 75, 87% ऑफ 150, 73% ऑफ 200, 65% ऑफ 100 एंड 72% ऑफ 50. ये सब कैलकुलेट करने के बाद में आप इसके टोटल स्कोर पता लगाएंगे. यू विल डिवाइड दैट अगेन बाय द total maximum marks of all these subjects and multiply that by 100 to get the total percentage of marks that B has scored overall. But now because we know the concept of weighted mean, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इनका average percentage calculate करेंगे. How do we go on to do it? For this we need to calculate the weighted mean of percentage marks that B has scored in all these subjects. कैसे किया जाएगा ये? For this multiply 76 by 3, 58 by 3. कहां से आ रही है ये वैल्यू? 76 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके इंडिविजुअल वेट से, 58 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके इंडिविजुअल वेट से. Similarly 87 into 6, then we have got 73 into 8, then 65 into 4, then 72 into 2. Divide all these by the total of weights, which is equal to 3 plus 3, 6 plus 6, 12 plus 8, 20. 20 plus 6 is equal to 26. So this would give us the average percentage that B has scored overall. So 76 into 3 is equal to 228. 58 into 3 is equal to 174. 87 into 6 is equal to 522. 73 into 8 is equal to 584. 65 into 4 is equal to 260. And 72 into 2 is equal to 144. Whole divided by 26. Adding these up, we'll get 1912 divided by 26, which is equal to 73.5%. So this is the total average percentage of all these subjects combined for student B. So the answer to this question is option number B, that is 73.54%. Question number 28. What is the average marks obtained by all 7 students in maths? Now for maths, अगर आपको इन सभी का एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैथ्स के लिए हमें वेटेड मीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनका एवरेज स्कोर कैलकुलेट करेंगे. किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? वी ऐड देयर इंडिविजुअल परसेंटेजेस. इन सभी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, then divide them by the number of students, which is equal to 7. This will give us the average percentage marks for all these 7 students. तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आती है कितनी? So adding the digits given at tens places, we get 8 plus 8 is 16, plus 7 is 23, plus 6 is 29, plus 9 is 38, plus 8 is 46, and 46 plus 6 is 52. So this is 520. Adding digits given at ones places, we get 1 plus 7, 8 plus 5 is 13, plus 4 is 17, plus 3 is 20, plus 9 is 29, plus 6 is 35. So this is equal to 555. The number of students that we have got is equal to 7. Dividing this, we get 7 sevens are 49, 7 nines are 63, and 7 twos are 14. This is the average percentage that the students have scored in the subject of maths. But the question is asking about the average marks. तो कैसे average marks calculate किए जाएंगे? 79.2% of 150. So this is equal to 0 से 0 cancel out किया, 5 twos are 10, 5 threes are 15. This is equal to 2 threes are 6, 2 nines are 18, and 2 sixes are 12. This is equal to 3 sixes are 18,
3 nines are 27. So this is equal to 3 threes are 9 plus 2 is 1118.8, and therefore we will mark option number B as the answer to this question. फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनकी एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट की स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए पूछी जा रही है एवरेज, therefore we do not need to get into the weighted average thing. इन सबको ऐड करने के बाद में जब हमने डिवाइड किया इस 555 को ऐड करके हमने जब 7 से डिवाइड किया, we get 79.2. This is the average percentage marks of all the students in the subject of maths. Or then we calculated 79.2% of 150, which is equal to 118.8. So this gives us 119 as the average score of all the students in the subject of math. Question number 29. What is the percentage of marks obtained by student E in history, geography, maths and Hindi together? Now the methodology of solving this question is similar to question number 26. यहाँ पे हम weighted average calculate करेंगे for the subjects of history, geography, maths and Hindi for student E. कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सेम मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं. 88 मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल वेट, दैट इज 3, प्लस 68 इंटू 3, प्लस 93 इंटू 6, प्लस 78 into 2, whole divided by the total of these weights, which is equal to 3 plus 3 6 plus 6 12 plus 2 is 14. So this is equal to 88 into 3 is equal to 264, 68 into 3 is equal to 204, 93 into 6 is equal to 558, and 78 into 2 is equal to 156. Whole divided by 14. Adding these up, we get 2 plus 2, 4 plus 5, 9 plus 1 is 10, 1000, plus 6 and 5 is 11 plus 5 is 16. So 160, and 4 plus 4 is 8 plus 8 is 16 plus 6 is 22. So this totals up to 1182. Dividing 1182 by 14, we get 84.42. So we will mark option number D as the answer to this question. Question number 30. What is the difference between the marks obtained by C and G in all subjects? Now, for calculating this, we'll first of all calculate the difference in the percentage marks for these two students. जब ये percentage marks के बीच में आप difference calculate कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर आपने एक के लिए calculate किया C minus G, तो आप सभी subjects के C minus G ही calculate करेंगे. And if you calculate G minus C for a subject, then सभी subjects के लिए आप G minus C को ही calculate करना शुरू करेंगे. After that, we'll calculate the weighted average of this difference. वो हमने सीख लिया किस तरह से करना है. तो सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं C और G के लिए. So calculating the difference between the percentage score of C and G. For history, this is equal to 59 minus 78, which is equal to minus 19. For geography, this is equal to 64 minus 72. So this is equal to minus 8. For maths, this is equal to 75 minus 66, which is equal to 9. For science, this is equal to 61 minus 71, that is minus 10. For English, this is equal to 71 minus 75, so this is equal to minus 4. And for Hindi, this is equal to 56 minus 80, so this is equal to minus 24. तो हमने यहाँ पे C minus G की वैल्यू कैलकुलेट की है इंडिविजुअली. नाउ वील कैलकुलेट द वेटेड मीन और वेटेड एवरेज ऑफ दीज डिफरेंसेस. सो फॉर दैट, मल्टीप्लाई 19 by 3, 8 by 3, 9 by 6, minus 10 by 8, minus 4 by 4, minus 24 by 2. Divide all these value with the total of weights. This is equal to 3 plus 3, 6 plus 6 is 12. 12 plus 8 is 20. 20 plus 6 is 26. So this is equal to 19 into 3 minus 57. 8 into 3 is minus 24. 9 into 6 is 54. 10 into 8 is minus 80.
4 into 4 is minus 16 and 24 into 2 is minus 48 whole divided by 26. इनको जब ऐड अप करते तो हमें वैल्यूज क्या मिलती हैं, देखिए माइनस का होगा 224 प्लस का हुआ 54 whole divided by 26. So this value is equal to minus 170 divided by 26. This is equal to 6.53. So 6.53% of the total of maximum marks, which is equal to 650. हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ये किया. This is equal to 42 point something, and therefore we will mark option number A as the answer to this question. Question number 31 to 35. The table given below shows the number of students appeared represented by APP and qualified represented by QAL in an examination from the 5 states during the period 93 to 1998. तो आपको ये states given है. These are 5 states A, B, C, D and E. यहाँ पे आपको data given है applied students का, number of students who have applied and number of students who have qualified from these centers for the years 93 to 1998. उसके अलावा आपको given है इनकी total values. So let's move on with the questions. Question number 31. What is the approximate percentage of students qualified from states B and C together in 1996? आपको कैलकुलेट करना है क्या, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट परसेंट, यानी कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को यहां पे काम में ले सकते हैं. ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है, और दूसरा आपको स्टेट सी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात की गई और पूछा गया ये डेटा इन द ईयर 1996. तो marking them individually, this is equal to 290 and this is equal to 325. Now in order to calculate this data, हम यहाँ पे add up करेंगे इस number of students qualified from B in the year 96 and number of students qualified from C in the year 1996. We'll divide this by the total number of students who have appeared. क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है percentage of students qualified. तो यहाँ पे total number of students appeared from B in the year 1996 and number of students who have appeared from C in the year 1996 and then multiplied this value by 100. तो qualified students का number देखिए कितना आ रहा है 290. B से in the year 1996 325 students qualified किए. C से in the year 1996 total number of students who have appeared from these two are 1250 and 1240. 1250 and 1240. Multiply this value by 100. This is equal to 6. 9 plus 2 is 11. 3 plus 2 is 5 plus 1 6. This is equal to 2490 multiplied by 100. ये हमने 0 से 0 कैंसिल किया. नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दी ऑप्शंस आर प्रिटी फार ऑफ. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 249 को हमने कन्वर्ट किया 250 में, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया और फिर 25 से डिवाइड करेंगे 616 को. तो इसको डिवाइड करने पे वैल्यूज देखिए क्या आ रही हैं. 25 2s are 50. This is equal to 611. 25 4s are 100. So this is equal to 61. Decimal value 25. 6s are 150. So 24.6. For this we get 24.6. Now मैंने आपको पहले भी बताया अप्रोक्सीमेशंस करते टाइम हमें याद रखना है कि हमारे आंसर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हमारे पास में गिवन था 249, यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया 250 में, which means we increased the denominator, which means that we have reduced our answer. So the original answer has to be more than 24.6. So the closest option that we get here as the answer is option number C, that is 25%. Question number 32. The total number of students appeared from state A during the year 96 to 98 is approximately what percent of the total number of students appeared from the same state during the year 93 to 95. तो क्या करना होगा यहाँ पे, total number of students appeared from 96 to 98 किसके लिए, for state A. तो यहाँ पे हमारे पास में add up होंगे 1200, 1150 and 980.
This is approximately what percentage of total number of students appeared from the same state during the year 93 to 95. तो अब आपको दूसरा ग्रुप बनाना है यहाँ पे 93 to 95 का. सो ये वाली वैल्यूज का टोटल आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है with this as its base. तो यहाँ पे सबसे पहले इनको एड अप करते हैं. हमारा न्यूमरेटर वैल्यू बन के आएंगे 1200 plus 1150 plus 980, and the base value will be 950 plus 1090 plus 860, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से टू गेट दी परसेंटेज वैल्यू. तो इसको एड अप करते हैं तो वैल्यू बन जाती है हमारे पास में 1000 plus 1000 is 2000. Then adding up digits at hundreds places, 200, 300 and 900. So this is equal to 1200. Then adding up digits at tens places, this is equal to 5 plus 8 is 13, that is 130. And then digits at zeros places. इसी तरह से denominator को add करेंगे. Thousands places के ऊपर we have got just 1000. Hundreds places पे we have got 9 plus 8, that is 17. Tens places के ऊपर we have got 5 plus 9, 14 plus 6 is 20, that is 200. And ones places पे we have got 0, और इसमें हमें percentage calculate करना है into 100. So this is equal to 3200 plus 130, that is 3330 divided by 2900 multiplied by 100. ये वैल्यू सॉल्व की हमने. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ अप्रोक्सीमेशन हम लोग 29 को यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं. 30 में कैंसिल आउट किया, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 111%. नाउ ध्यान रखिएगा, हमने अपने डिनोमिनेटर को 29 से 30 में कन्वर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी डिनोमिनेटर को बड़ा किया है, विच मीन्स कि ये आंसर हमारे ओरिजिनल आंसर से छोटा है. Therefore, original answer will be greater than 111%. The only option that we can therefore mark as our answer is option number E, that is 115%. Question number 33. The total number of students qualified from all the states in the year 1998 is approximately what percent of the total number of students appeared from all the states in the same year? कौन से ईयर की बात हो रही है यहाँ पे? 98 की बात हो रही है. तो 98 पे हमें एक बार तो कैलकुलेट करना होगा qualified number of students का total, that is 280, 336, 305, 280 and 290, और इसे हमें डिवाइड करना होगा total number of students appeared, that is 980, 1080, 1140, 1150 and 1075. तो यहाँ पे हम लोग एड अप करेंगे इन्हें. तो 280, 336, 305, 280, 290 as the numerator, and 980 plus 1080 plus 1140 plus 1150 plus 1075 as the denominator, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. नाउ अगेन गोइंग बाय द सेम फॉर्मेट, लेफ्ट टू राइट हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे. 100 प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड किया तो 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 8, plus 2 is 10, plus 2 is 12. So this is equal to 1200, plus adding digits at the tens places, 8 plus 3 is 11, plus 8 is 19, plus 9 is 28. This is 280. Then adding up digits at the ones place, we get 6 plus 5, 11. For the denominator, we get adding up digits at the thousands places, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Plus 1, 4, that is 4000. Adding up digits at the hundreds places, we get 9 plus 1, 10, plus 1, 11, that is 1100. Then adding up digits at the tens places, we get 8 plus 8 as 16, plus 4 is 20, plus 5 is 25, and 7 is 32, that is 320. And then finally adding up digits at the ones places, we get just 5. Multiply this by 100. So the total value that finally we get is 1200 plus 280 is 1480, and then 11 is 1491, and for the denominator we get 4000 plus 1150, 100, 5420 and 5425. Multiply this value by 100. इसे cancel out करते तो हमारे पास value आती है 5 ones are 5, zeros, 5 eights are 40 and 5 fives are 25. This is 5 20s are 100. Further cancelling this out, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 7s are 35.
and 5 fours are 20. Multiplying this by 4, we get 4 ones are 4, 9 fours are 36, 4 fours are 16, and 3 is 19, and 4 ones are 4 is 5, 5964 divided by 217. Now इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दिस इज 217 और इससे डिवाइड किया जा रहा है 5964 को, तो ये वैल्यूज हमारे पास में आती है 217 into 2 is equal to 434. This is equal to 4 to 9 minus 3 is equal to 6, and this is 1. Then 217 into 8 we get 7 8s are 56, 8 1s are 8, 5s are 13, 8 2s are 16, and 17 36. So we'll have to mark 7. So our answer will be 27 point something, and therefore we will mark option number B as the answer to this question. Question number 34. The number of students qualified from state D during the years 93 to 95 is approximately what percentage of the students appeared from state D during the same year? तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट डी के बारे में, और जो ईयर्स आपको यहाँ पे गिवन है वो है 93 to 1995, which means these 3 years. Now आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है students qualified, the number of students qualified from state D is approximately what percent of students appeared from state D during the same years. इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया. क्या किया जाएगा यहाँ पे, क्वालिफाइड का नंबर हमारा बनेगा न्यूमरेटर, तो 260 plus 305 plus 375, and for denominator we will have 975, 990 and 1400. मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ में, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज. This adds up to 2 plus 3 is 5 plus 3 is 800. 6 plus 7 is equal to 13, that is 130. And for ones places we have got 5 plus 5, that is 10. Whole divided by, this is equal to thousands places को पर आपको given है केवल 1, तो this is 1000. At hundreds places we have got 9 plus 9, 18 plus 4 is 22, so this is 2200. At tens places we have got 7 plus 9 is 16, that is 160, and for ones places we have got 5. Multiply this entire value by 100. Total value हमारे पास में बन के आती है 940. Denominator की value हमारे पास में बन के आती है 3200 plus 160 3360 plus 5 3365 multiplied by 100. फर्दर यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं इन वैल्यूज को, तो 5 से कैंसिल आउट किया, दिस इज इक्वल टू 5 6s are 30, 5 7s are 35, and 5 3s are 15. This is 5 20s are 100. now यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन को एंगेज करेंगे, किस तरह से करेंगे, हम उसको बना लेते हैं 670. याद रखिएगा हमने डिनोमिनेटर को 673 से चेंज किया 670 पे, तो 0 से 0 हमारे पास में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं. फर्दर दिस बिकम्स इक्वल टू 188 डिवाइडेड बाय 67. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज देखिए क्या आ रही है, 1880. 67 2s is equal to 134. This is 0. 8 minus 4 is 4. 8 minus 3 is 5. 67 8s. So this is equal to 28 point something. Now हमने क्या किया था, 673 को 670 में कन्वर्ट किया था, यानी डिनोमिनेटर को छोटा किया था, which means हमारा आंसर बड़ा हो गया है with respect to the original answer. तो your original answer is going to be less than 28%. तो 28% से जस्ट छोटी हमारे पास में जो नजदीकी वैल्यू में दिखाई दे रही है वो ऑप्शन नंबर डी ही दिखाई दे रही है. Therefore we will mark D as the answer to this question. Question number 35. The percentage of students qualified is highest for which state during the given period? For question number 35 हमें क्या करना होगा, हमारे पास में टोटल वैल्यूज यहाँ पे students appeared from a state and the number of students qualified from that particular state given है. तो for state A हमारे पास में ये वैल्यू बन के आती है 1720 by 6230. For state B this is equal to 1731 divided by 6570. For state C this is equal to 1850 upon 6750. For state D this is given to be
1825 divided by 6770, and for state E this is equal to 1803 divided by 6883. नाउ यहां पे हमने फ्रैक्शन कंपैरिजन के अंदर जो चीजें सीखी थी, जो मेथड सीखे थे, उनमें से कोई भी मेथड साफ तौर पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, और इसलिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितनी कितनी वैल्यूज हैं इनकी इंडिविजुअली देखिए. This is equal to 0.276. This is equal to 0.263. This is equal to 0.274. This is equal to 0.269. And this is equal to 0.263. Now we can see ये values बहुत close हैं एक दूसरे के, और एग्जाम में इतनी values को without calculator solve करना is next to impossible. Therefore, it is better to skip a question like this instead of wasting your time on it. So we are being asked about the highest percentage. तो यहाँ पे highest percentage साफ तौर पे हमें दिखाई दे रही है state A के लिए. Therefore, we will mark A as the answer to this question. Question number 36 to 40. The table given below shows the data about the bulbs manufactured and rejected in 4 quarters during the period 96 to 2000. तो यहां पे आपको दो तरह का डेटा गिवन है, नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड एंड नंबर ऑफ बल्ब्स रिजेक्टेड. ये आपको गिवन है अलग अलग क्वार्टर्स के लिए ओवर डिफरेंट ईयर्स. 96 टू 2000 का डेटा यहाँ पे आपको गिवन है, और आपको क्वेश्चंस आंसर करना है उसके बेसिस के ऊपर. इसके अलावा आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्या कि नंबर ऑफ बल्ब्स रिजेक्टेड इन अ क्वार्टर आर ओनली फ्रॉम द बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट क्वार्टर ऑफ अ गिवन ईयर. So for example, quarter 2 में 895 बल्ब्स मैन्युफैक्चर हुए और 185 बल्ब्स रिजेक्ट हुए. तो these 185 बल्ब्स आर फ्रॉम these 895 बल्ब्स ओनली. इसमें पुराने कोई भी कैरी फॉरवर्ड बल्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उनका नंबर कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है. इसके अलावा आपको दिया गया नंबर ऑफ बल्ब्स एक्सेप्टेड आर डिफाइंड एज द रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब्स आफ्टर रिजेक्टिंग द बल्ब्स from the total number of manufactured bulbs from a given quarter. Moving on with the questions. In which of the following years the percentage of bulbs rejected is minimum? Now for solving this हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए. हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज ऑफ बल्ब्स रिजेक्टेड. किस तरह से किया जाए? सो फॉर एग्जांपल मैं ईयर 96 के लिए परसेंटेज ऑफ बल्ब्स रिजेक्टेड कैलकुलेट करना चाहता हूं. सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको टोटल करते हैं, टोटल कितना रिजेक्टेड का हुआ. जब ये बात कर रहे हैं हम लोग 96 की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 200 300 300 प्लस 200 is equal to 500. Adding digits at tens places we get 6 plus 4 10 plus 3 13, that is 130. And then digits at ones places we get 1 whole divided by total number of bulbs manufactured. So this will add up to 7 plus 9 is 16 plus 9 is 25 plus 7 is 32. So 3200. Then 9 plus 4 is 13 plus 3 is 16 plus 4 is 20. So 200. And then digits at ones places we have got 8 plus 5 13 plus 5 18. So this is 18. This will add up to 631, and this will add up to 3418. For the year 1997, the calculations will be 100 plus 100 200 300 and 400. Tens places pe we have got 8 plus 8 16 plus 7 23 plus 6 is 29. So we will write it as 290. And that at ones places we have got 5 plus 9 14. For denominator we get 8 plus 8 16 plus 9 25 plus 7 32. So this is 3200. Plus at tens places we have got 3 plus 9 12 plus 1 13 plus 3 16, that is 160. And at ones places we have got 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 2 and 17. Adding this up we'll get 690 and 14, which is equal to 704, and this is equal to 3377. For the year 1998, the numerator will add up to 100 plus 100 200 300 and 400. At tens places we have got 5 plus 7 12 plus 6 18 plus 7
25, that is 250. And at ones places we have got 8 plus 8, 16 plus 5, 21 plus 2, 23. For denominator we get, adding up digits at hundreds places, we get 7 plus 8, 15, plus 8, 23, plus 7, 30. At tens places we get 8 plus 8, 16, plus 2, 18, plus 4, 22. And at ones places we get 5 plus 8, 13, plus 5, 18 plus 8 is 26. Adding this we get 650 plus 23, 673. And for denominator we get 32, 20 and 26. So 3246. For the year 1999, adding up digits at the ones places we get 400. Adding up digits at the tens places we get 6 plus 9, 15 plus 8, 23, and 23 plus 6 is 29, so 290, and digits at ones places would be 2 plus 4, 6 plus 8 is 14. Similarly for denominator we add up 8 plus 9, 17 plus 8, 25, plus 8, 33, 3300. Digits at tens places would be 2 plus 2, 4, plus 4, 8 plus 6 is 14, that is 140. And at ones places we get 4 plus 1, 5 plus 7, 12, 12 plus 8 is 20. So this is equal to 690 plus 14, 704. And this is equal to 3440 plus 20, that is 3460. Lastly, for the year 2000, the number of rejected bulbs would be 100 plus 100, 200, 300 and 400. Adding up digits at the tens places, we get 7 plus 9, 16, plus 7, 23, plus 6, 29, that is 290. And at ones places we have got 8 plus 2, 10 plus 9, 19. For the denominator we get, adding up digits at the 100 places, we get 800 plus 900, 1700, 1700 plus 1600 is 3300. Adding up digits at tens places, we get 5 plus 1, 6 plus 5, 11 plus 1, 12, that is 120. And at ones places, we get 4 plus 1, 5 plus 8, 13 plus 5, 18. And this adds up to 3420 plus 18, 3438. Now here we need to identify the fraction with the minimum value. Starting with the year 97 and 99, both of these have got the same numerators. तो रूल नंबर वन, स्टेप नंबर वन ऑफ कंपेयरिंग दी फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर्स यहाँ पे सेम हो गए हैं, हमें रिटेन करना है ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू मिनिमम हो. तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज हायर फॉर 1999, therefore 97 will get eliminated because we are looking for the minimum value. और क्योंकि 97 का डिनोमिनेटर 99 के डिनोमिनेटर से कम था, so the year 97 gets rejected. Next we compare the years 99 and 2000. 70 से 4 से 709 पे मूव करते टाइम हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सजेस्टिंग दैट द फ्रैक्शंस वैल्यू शुड गो अप. 3460 से 3438 पे मूव करते हुए हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, suggesting that the fractions value should go up. Therefore, clearly 2000 has got a greater fractional value as compared to 99 because we are looking for the minimum value. Therefore, 2002 gets eliminated here. Finally, comparing 673 to 704, 673 से 704 पे जाते हुए न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, suggesting that the fractions value is more. 3246 से 3460 पे जाते हुए डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सजेस्टिंग दैट द फ्रैक्शंस वैल्यू इज गोइंग डाउन. यानी यहां पे अब हमें कंपेयर करने पड़ेंगे प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो फॉर दैट देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 673 अपॉन 3246, कंपेयरिंग दिस वैल्यू विद 704 एंड 3460. 673 से 704 पे जब हम जा रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 31 इन द न्यूमरेटर. 3246 से 3460 पे जाते हुए there is an increase of 214 in the denominator. Now 31 upon 673 को अगर आप कंपेयर करते हैं 214 अपॉन 3246 से, तो ये वैल्यू हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली बन के आ रही है मोर देन 2 टाइम्स. यहां पे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में मोर देन 2 टाइम्स बन के आएगी, जबकि इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करके यहां पे कैंसिल आउट करोगे, सो दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1.5. तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे डिनोमिनेटर किसका छोटा बन के आया, ये वैल्यू हमारे पास में डिनोमिनेटर छोटी बन के आई. इसका मतलब
यहां पे प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने के बाद में हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा आया है एज कंपेयर टू दिस। हमने दोनों न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर से पूरी तरह से कैंसिल आउट करके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल रहे हैं। सो डिनोमिनेटर में यहां पे आ रहा है हमारे पास में 2, ऊपर न्यूमरेटर में रह रहा है 1, और यहां न्यूमरेटर में आ रहा है 1, डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1.5। therefore this particular value is more than this value। इसका मतलब डिनोमिनेटर में प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा हो रहा है, तो डिनोमिनेटर के सजेशन को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, विच मींस कि द फ्रैक्शंस वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो जब हम यहां से यहां पे आ रहे हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देयरफॉर हमें मिनिमम वैल्यू को मार्क करना है। नाउ दिस मींस 98 गेट्स एलिमिनेटेड। नाउ फाइनली हम कंपेयर करेंगे 96 और 99 को। तो 96 के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में बन के आ रही है 631 अपॉन 3418, और 99 के लिए जो वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है दैट इज इक्वल टू 704 अपॉन 3460। अगर हम न्यूमरेटर के हिसाब से चलते हैं तो न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, देन देयरफॉर इट सजेस्ट दैट द फ्रैक्शंस वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। एंड सिमिलरली 3418 to 3460, the denominator is increasing and it suggests that the fractions value is decreasing in this case. Therefore, now we would need to get into the proportionate comparison of changes in numerator and denominator. तो देखिए जरा 631 से 704 के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, there is a change of 73 in the numerator, whereas for denominator this change is equal to 42। clearly जब हम 73 को as proportion of 631 compare करेंगे as compared to 42 as proportion of 3418, तो हमें पता चलता है कि न्यूमरेटर में प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा आ रहा है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन न्यूमरेटर इज मोर एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिनोमिनेटर। जब हम मूव कर रहे हैं इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन के ऊपर, therefore we will go by the suggestions that is being made by the numerator, which says that the fractions value should be increasing, which means that 704 upon 3460 is a greater fraction as compared to 631 upon 3418, and therefore because we are looking for the minimum value 704 upon 3460, that is 99 gets eliminated, and the final answer to this question is option number A. Question number 37. In the year 1999, the number of bulbs rejected in quarter 2 is approximately what percentage of the total bulbs manufactured in quarter 4 for the same year? किस किस का कंपैरिजन करना है देखिए हमें यहाँ पे। फॉर द ईयर 1999 के अंदर क्वार्टर टू में रिजेक्टेड बल्ब्स, क्वार्टर टू के रिजेक्टेड बल्ब्स कितने हैं यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 190 is approximately what percentage of the total bulbs manufactured in quarter 4 for the same year? तो manufactured number of bulbs आपको दे रखे हैं 868। हमें इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, which means we would calculate 190 by 868 into 100। नाउ ऑप्शंस को देखें तो दे आर प्रिटी फार ऑफ, विच मींस हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किस तरह से करें? 868 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 870 में। याद रखिएगा हमने 868 को 870 में कन्वर्ट किया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया। दिस इज इक्वल टू 1900 अपॉन 87। नाउ 87 को हम कन्वर्ट करते हैं 90 में, सो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 9 2s are 18, 9 1s are 9, so 21 point something is the answer। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखिएगा, अगर आपने डिनोमिनेटर को फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, फॉर द पर्पस ऑफ अप्रोक्सीमेशन इंक्रीज किया है, तो बाद के स्टेप्स में भी अगर जरूरत पड़े तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज ही कीजिए। सो 868 को हमने 870 में कन्वर्ट किया था, तो 87 को 90 में कन्वर्ट करें, so that we are clear about the direction in which our answer is going। so 21 point something is the value that we get here। हमने अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया था, which means हमारे एक्चुअल आंसर से हम छोटे आंसर पे भी हैं। योर एक्चुअल आंसर हैज टू बी मोर देन 21। सो 21 से जस्ट बड़ी हमारे पास में जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है दैट इज 22%। therefore you will mark B as the answer to this particular question। Question number 38.
For which of the following quarters of the year 1996 the total bulbs rejected as a percentage of bulbs manufactured is maximum? Which means आपको यहाँ पे 96 को कंसिडरेशन में लेना है और आपको रिजेक्टेड बल्ब्स का परसेंटेज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। तो देखिए क्या हो रहा है, 96 की अगर बात करते हैं, so for quarter 1 this percentage will be 160 upon 798. For quarter 2 this percentage will be 201 upon 945. For quarter 3 this percentage will be 140 upon 930, and for quarter 4 this percentage will be 130 upon 745. Now इन्हें कंपैरिजन करते हैं, अगेन फ्रैक्शन कंपैरिजन वी हैव एट आवर हैंड। तो कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे फ्रैक्शन कंपैरिजन का, यानी कि वेयर वी लुक आउट फॉर फ्रैक्शंस फॉर विच हैव गॉट ईदर सेम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं आ रही है। नाउ स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाते हैं हम लोग। स्टार्ट विद कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, सजेस्टिंग दैट द फ्रैक्शंस वैल्यू इज डिक्रीजिंग. Similarly, the denominator value is increasing, also suggesting that the fractions value is decreasing, which means कि third quarter का जो percentage rejection है, that is less than the percentage rejection in quarter 1. So because we are looking for the maximum value, third gets eliminated in this case. Next, let's compare first with third. So 160 upon 798 as compared to 130 upon 745. The value of numerator is decreasing, suggesting that the value of fraction should also be decreasing. 798 to 745, the value of denominator is decreasing, suggesting that the value of fraction should be going up. अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज को चेक करेंगे, तो 160 से 130 के ऊपर जब जा रहे हैं तो द चेंज इज ऑफ 30. 798 से 745 पे जब हम जा रहे हैं, द चेंज इज 53. नाउ इफ वी कंपेयर द proportionate change in numerator to proportionate change is in denominator, यानी कि 30 as a proportion of 160 को कंपेयर करें और 53 as proportion of 798 को कंपेयर करें, तो clearly proportionate change in numerator is more than that in denominator. तो we would go by the suggestion that is being made by the numerator, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 160 से 130 पे मूव करते टाइम, which means 130 upon 75 is a smaller fraction as compared to 160 upon 798. Because we are looking for the maximum value, fourth 2 gets eliminated. Now we would compare first with second. तो आप यहाँ पे अगर देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सजेस्टिंग दैट फ्रैक्शंस वैल्यू शुड गो अप. Denominator की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, suggesting that fractions value should go down, which means we need to get into the comparison of proportionate change in numerator and denominator. तो यहां देखिए न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू 41, डिनोमिनेटर में एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू 147. तो कंपेयर करना होगा 41 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 160 को with 147 as a proportion of 798. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब कैंसल आउट करोगे आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, दिस वैल्यू वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1/4, और अगर आप इसको कैंसल आउट करने के लिए जाओगे, this value will be approximately 1/7, which means proportionate change in numerator is more than proportionate change in the denominator. Therefore, we would go by the suggestion made by the numerator, which means second is a bigger fraction than first. Now, because we are looking for the maximum value, therefore we will mark B as the answer to this question. Question number 40. What was the ratio of change in the number of bulbs manufactured to the change in the number of bulbs rejected from quarter 2 to quarter 3 in the year 1997? 1997 की बात यहां पे की जा रही है, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के मूवमेंट की बात की जा रही है. तो द नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 पे जाते हुए चेंज देखिए कितने का आ रहा है,
this change is equal to 20. 915 minus 895, this is a change of 20. और इसका रेशियो आपको चेक करना है किसके साथ में, change in the number of bulbs rejected from quarter 2 to quarter 3, quarter 2 to quarter 3 in the same year. तो number of bulbs rejected का नंबर देखिए 185 minus 170, so this is a change of 15. So the ratio is equal to 5 4s are 20, 5 3s are 15, that is 4:3. Therefore, you will mark C as the answer to this question. Question number 41 to 45. Six friends, namely Jyoti, Rati, Pooja, Anuja, Monisha, and Shifali, were taking the test series of a reputed coaching institute. A test consists of 200 questions. The marking scheme is such that for every correct answer, the student is rewarded with 2 marks. For every incorrect answer, 1 mark is deducted, and for every question left unanswered or unattempted, 0.25 mark is deducted. The table given below shows the number of questions answered correctly and final score of the candidate. Rest of the questions may be considered as either unattempted or answered incorrectly by the candidate unless it is stated in the question. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कितना कितना हमारे पास में स्कोर बन रहा है. So for correct value which is being represented by C, the marks that we get is +2. For incorrect answer represented by I, the marks that we get is -1. And for unanswered represented by U, we get minus 0.25. Now we are provided with the number of correct questions marked by these students and the final score of these students. Question number 41. Which of the following options shows the number of questions left unattempted and the number of questions answered incorrectly by Jyoti? क्या क्या मार्क करना है आपको, unattempted and the questions answered incorrectly. तो ज्योति का स्कोर देखिए कितना है 301. The total number of questions is 200. तो इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, 163 multiplied by 2 minus number of questions marked incorrect is I, तो -1 into I is minus I, and minus 0.25 into U. This entire value is given to be equal to 301. So this is equal to 326 minus I minus 0.25 of U. This is equal to 301. So I plus 0.25 of U. Solve कर रहे हैं equation को. This will be equal to 25. Now another equation that we can get here is कि आपके number of correct questions answered is 163, so the remaining number of questions will be 37. So the number of incorrect and unanswered question will be 37. Simultaneously इस equation को solve करेंगे. So this is equal to, ये I से I cancel out हो जाता है. This value becomes equal to 0.75. नेगेटिव में वैल्यू आ रही है लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड पे भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 0.75 ऑफ u इज इक्वल टू 12. सॉल्विंग दिस वी गेट u की वैल्यू इक्वल टू 12 अपॉन 0.75. डेसिमल हटाएंगे इनटू 100, 25 3s, 25 4, so this is equal to 3 4s are 12, 4 4s are 16. So the number of questions unanswered is equal to 16, whereas the number of questions answered incorrectly will be the remaining, that is 21. Therefore you will mark C as the answer to this question. Question number 42. If the number of questions left unattempted and those answered incorrectly by Monisha are in the ratio 9:4, then her score in the test is what? देखिए मोनिशा के बारे में हमें क्या information given है. We are provided with the correct number of questions that she has answered. तो गोइंग बाय दी सेम वैल्यूज, तो पहली चीज हमें यहाँ पे इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का नंबर पता लगाना होगा. तो क्योंकि हमें दे रखे हैं इनके रेशियोज 9:4, इनकरेक्ट के याद रखिएगा लेफ्ट अनअटेम्प्टेड एंड इनकरेक्ट. तो अनअटेम्प्टेड का नंबर हमें दे रखा है 9x, हमने इसको ले लिया 9x, और इनकरेक्ट का नंबर हमें दे रखा है 4 रेशियो में. सो दिस इज इक्वल टू 4x. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनके बारे में हमें नहीं पता है
this value is equal to 52. So this is equal to 13x is equal to 52. So x is equal to 4. So individually, the number of questions unanswered, unattempted will be 9 fours are 36, and number of questions answered incorrectly will be equal to 4 into 4, that is 16. Now we need to calculate the marks that he has scored. So for every correct question, she is getting 2 marks. So the score will be 148 into 2. Unattempted question is equal to 36. So this is 36 into 0.25, and incorrect answers are 16. So for every incorrect, she is losing 1 mark. So minus 16 into 1. Finally solving this, we get 296 minus 9 minus 16. So 296 minus 25. This is equal to 271. Option number A will be the answer to this question. Question number 43. If marks deducted for unattempting and that for answering questions incorrectly by Rati are 6 and 44 respectively, then what is the number of questions answered correctly by her? Rati के केस में हमें क्या information given है? We are provided with her final score. पहले हम लोग पता लगा लेते हैं कि इन्होंने कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रखे और कितने इनकरेक्ट मार्क किए. तो अनअटेम्प्टेड से देखिए इनका जो स्कोर बन के आ रहा है, दैट इज 6. इसका मतलब कितना हुआ? हमें पता था कि अनअटेम्प्टेड के अंदर 0.25 और अनअटेम्प्टेड इज इक्वल टू, यहां पे आपको दे रखा है 6. तो अनअटेम्प्टेड का नंबर बन के आता है 6 अपॉन 0.25, विच इज इक्वल टू 24. सिमिलरली जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर शी वाज लूजिंग 44 मार्क्स, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क लूज हो रहा था. तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर बन के आता है 44. कुल मिला के हमारे पास में ये क्वेश्चंस का हिसाब किताब आ गया. 44 इनकरेक्ट, 24 अनआंसर्ड, 68 क्वेश्चंस का हमारे पास में वैल्यू मिलके आ चुकी है, नंबर हमारे पास में आ चुका है. सो द रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज 200 minus 68, that is equal to 132, is the number of questions that she has answered correctly. Therefore, you will mark D as the answer to this question. Question number 44. What is the difference between the number of questions attempted incorrectly by Shefali and those by Jyoti? तो देखिए यहाँ पे शेफाली के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है. शेफाली के आपको करेक्ट क्वेश्चंस पता है और फाइनल स्कोर पता है. तो अगर हम लोग शेफाली के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके जाते हैं, तो पहली चीज तो अनअटेम्प्टेड प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चंस का जो सम बन के आएगा, 142 क्वेश्चंस शी मार्क करेक्टली. तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे, यानी कि 58 क्वेश्चंस या तो अनअटेम्प्टेड थे या इनकरेक्ट थे. दूसरा आपको दे रखा है इनका स्कोर 244. तो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन से शी स्कोर्ड 2, so 2 into I minus 0.25 into unattempted and minus I. This total is given to be 244. यहाँ पे I की जगह हम लोग replace करेंगे 142. तो 142 का double is 284. So 0.25 of U plus I will be equal to 40, and this is equal to U plus I is equal to 58. ये हमने equation use करी ये वाली. Question number 41 को जिस तरह से solve किया था, बिल्कुल same format में question सॉल्व हो रहा है. इसको माइनस किया है, कैंसिल आउट हो जाता है. वैल्यू बन के आई आपके पास में माइनस का 0.75 ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस का 18. तो माइनस तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले कैंसिल आउट कर दिया है. तो यू की वैल्यू बन के आ जाती है 18 अपॉन 0.75. दिस इज इक्वल टू 100. 25 3s, 25 4s, 3 6s are 18. So this is equal to 24. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड बाय शेफाली इज इक्वल टू 24. आपको यहाँ पे बताना है डिफरेंस बिटवीन इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क्ड बाय these two students. तो बाकी बचे हुए इनकरेक्ट नंबर हमारे पास में आ जाता है कितना? u प्लस आई की वैल्यू तो 58. तो i की वैल्यू हमने 24 यहाँ पे u की जगह रखा. सो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 34. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्ड इनकरेक्टली बाय शेफाली इज इक्वल टू 34. ज्योति के लिए नंबर हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस वाज इक्वल टू 21. ज्योति के केस में दिस वाज इक्वल टू 21. सो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्ड इनकरेक्टली बाय शेफाली एंड ज्योति इज इक्वल टू 13, एंड देयरफॉर यू विल मार्क B as the answer to this question. Question number 45. If Anuja's score in the test was 265, then what is the number of questions answered incorrectly by her
हम लोग इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अनुजा के केस में हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 152 as the total number of questions that she has attempted correctly। तो बाकी बचे हुए हमारे पास में 48 क्वेश्चंस या तो इनकरेक्ट हैं या अनअटेम्प्टेड हैं। तो u plus I that is unattempted and incorrect questions का टोटल नंबर is equal to 48। सिमिलरली टोटल स्कोर अगर हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए जाते हैं तो 152 into 2 is equal to 304 minus unattempted that is 0.25 of u and incorrect that is minus I. This total is given to be equal to 265. So 0.25 of u and I, this value is equal to, this is 265. So this value is equal to 304 minus 265, which is equal to 39. Another equation that we have with us is u plus I is equal to 48. Solving these cancel out hota hai. 0.75 here is equal to 9. 0.75 of u. So u is equal to 9 upon 0.75. This is equal to 100. 25 threes, 25 fours, 3 threes are 9. So the number of unattempted questions is 12. हमसे यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट का नंबर, दोनों का टोटल था 48, तो 48 minus 12, this will be equal to 36. Therefore you will mark E as the answer to this question. Question number 46 to 50. Answer the questions on the basis of the information given below. यहाँ पे आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल दिखाई दे रही है जहां पे आपको डेटा प्रोवाइडेड है फॉर डिफरेंट ईयर्स, किस किस का, इंपोर्ट्स का, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी का, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का। नाउ इस डेटा को तो समझेंगे, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे जो आपको चेक करनी है वो ये कि आपको ये वैल्यूज मिलियन टन्स के अंदर, सभी यूनिट्स मिलियन टन्स के अंदर गिवन है, विच मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस, क्योंकि अब हमें यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे दो वैल्यूज और गिवन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, और इनकी कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा किस तरह से की जानी है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इससे ज्यादा डेटा यहाँ पे समझना मुश्किल होगा एंड वी डू नॉट नीड टू डू एज वेल। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द ईयर 2001। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कितना परसेंटेज होगा ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की वैल्यू आपको यहां पे प्रोवाइडेड है क्या, 2001 में सबसे पहले चेक कीजिए, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इज गिवन टू बी इक्वल टू 3.85 इन दिस केस। सेकेंडली वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोल लीजिए या डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोल लीजिए, ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे गिवन नहीं है, यानी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको दी गई है, दिस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी विच इज गिवन टू बी इक्वल टू 60 माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स विच इज इक्वल टू 5। So this value is equal to 55, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 55 and this can be used for other questions as well। आपसे पूछा गया 3.85 is what percentage of 55, तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इसकी। यहाँ पे ये 100 को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हमारा एलिमिनेट हो गया। सॉल्विंग दिस वी गेट 11 5s are 55, 11 3s are 33, 11 5s are 55, this is equal to 7। Therefore your answer will be option number E, that is 7%। Question number 47, what was the net domestic production in the year 2002। 2002 के लिए आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि ये वैल्यू कैलकुलेट की जानी है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी माइनस इंपोर्ट्स, बट यहाँ पे नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी पता नहीं है। ऑल्दो वी नो इंपोर्ट्स बट वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी। किस तरह से कैलकुलेट की जानी है, domestic procurement quantity which is given in this case to be equal to 3 multiplied by 100 divided by domestic procurement as percentage of net production, ये वैल्यू में हमारे पास में प्रोवाइडेड है, this is equal to 4.5, इसे डिवाइड किया 4.5 से, and then we need to add the value of imports। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है 3.33। तो अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम सीखा हुआ है, आपने मैथ्स के बेसिक सीखे हुए हैं, तो यू शुड बी नोइंग कि 3.33 can also be written as 10/3। This makes calculations easier। तो ये आपने सॉल्व किया, this is equal to 315। Further cancelling this out, we will get 5 3s are 15, 5
200s is 1000. Adding these up, we get 210 upon 3. This value is equal to 70. So 70 million tons is the value of net domestic availability. Question आपसे पूछ रहा है net domestic production की value. So net domestic production in this case will be equal to net domestic availability, which is equal to 70 minus the value of imports, which is equal to 3.33. So this value will be equal to 66.67, and the unit of million tons is common to all of them. Therefore, you will mark B as the answer to this question. Here also, we can use this as a standard value for other questions as well. That is 66.67 million tons. Question number 48. What was the net domestic availability in the year 2004? अब 2004 के लिए आपको net domestic availability calculate करनी है. क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे? Domestic procurement quantity क्या हमें provided है? Domestic procurement quantity की value, yes, this is given to be 2.1. Domestic procurement as a percentage of net domestic production, this is also provided to you. Plus the value of imports भी हमें यहाँ पे provided है. तो we just need to substitute these values. तो क्या हो जाएगी हमारे पास में net domestic availability की value for the year 2004. This is equal to domestic procurement quantity, which is 2.1. Multiply this value by 100. Divide this value by domestic procurement as percentage, which is equal to 2.8, and add the value of imports, which is equal to 0.75. Solving these, we get 7 3s are 21, 7 4s are 28, 4 25s. This value is equal to 75.75 million tons. Your answer will be option number D. Now, this can be used to calculate the value of net domestic production for the year 2004 as well. तो ये value हमारे पास में बन के आ जाती है कितनी? 75.75 net domestic availability में से imports को minus कर देंगे तो this value becomes equal to 75 million tons. क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसको काम में लिया जाएगा. Question number 49. In which year during the given period was the net domestic production closest to the average domestic production? यानी हमें क्या करना है यहाँ पे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक एवरेज कैलकुलेट करना होगा. तो हमारे पास में बाकी सभी ईयर्स का तो अवेलेबल है ये डेटा. 2005 के लिए हमारे पास में ये डेटा अवेलेबल नहीं है. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें 2005 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसके लिए हमें चाहिए नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, जो कि इस केस में 82 प्रोवाइडेड है, बट हमारे पास में नहीं है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे. नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की वैल्यू इज इक्वल टू 82. This is equal to domestic procurement quantity, which is given to be equal to 2 multiplied by 100 divided by domestic procurement as a percentage, which is given to be 2.5. और इसमें ऐड किया जाना है imports. By here we will get the value of imports for the year 2005. सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू हमारे पास में आया, डेसिमल ऊपर गया 25 40s, तो दिस इज इक्वल टू 80. तो इंपोर्ट्स की वैल्यू फॉर द ईयर 2005 हमारे पास में आ गई कितनी? दिस इज इक्वल टू 2. तो ये वैल्यू हो गई है 2 कैलकुलेट यहाँ पे, विच मीन्स यहाँ पे द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी बन के आ जाएगी? 82 माइनस 2. कैसे कैलकुलेट करना था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन? नेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. सो दिस इज इक्वल टू 80. तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 80. अब क्या करना है? अब हमें बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ईयर्स किसकी वैल्यू इन सभी ईयर्स के एवरेज के क्लोजेस्ट है. तो फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस. तो इन सबको ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करने के ऊपर हमारे पास में वैल्यू आ रही है 326.67. और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू डिवाइड दिस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स दैट वी हैव. So this is equal to 5 6 are 30, 5 5s are 25 point something million tons. तो क्लोजेस्ट वैल्यू हमें इसके अंदर बतानी. तो क्लोजेस्ट वैल्यू वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई 2002 के अंदर बन के आ रही है. Therefore you will mark B as the answer to this question. Question number 50. In which year did the net domestic production witness the least rise over the previous year? यहां पे आपको परसेंटेज की टर्म्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करना है. आपको बताना है एब्सोल्यूट टर्म्स में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, व्हिच मींस दिस कॉलम पिछले साल के मुकाबले, उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले कहां पे मिनिमम ग्रोथ लेके आ रहा है,
केवल ग्रोथ को कंसिडरेशन में लेंगे, डी ग्रोथ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे. सो फॉर द ईयर 2002 दिस ग्रोथ इज इक्वल टू 66 माइनस 55. 55 से 66 पे आते हुए this growth is equal to 11.66. Then 66 से 50 को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्योंकि this is a degrowth. 52 to 75 this growth is equal to 25 and 75 to 80 this growth is equal to 5. हमें आइडेंटिफाई करना है किस ईयर में this growth is minimum. So clearly your answer to this question will be 2005 and therefore you need to mark A as the answer to this question. That's all from this video. Catch you up in the next one. Till then, keep learning.